So write down new heading, NOI approach with taxes. Let us see the next question. Company X and Y are identical in all respect, including the risk factors for debt and equity. X having issued 10% debentures of 18,000, while Y has issued only equity. Both the companies earn 20% before interest and taxes on their total asset of 30,000. Assuming income tax rate of 50% and capitalization rate 15% for an all equity company. Compute the value of X and Y and overall cost of capital using NOI approach. That is a question. Again, I request all of you to do working for company Y first of all. Heading will be like this: calculation of value of firm and WACC for both companies, comma, if tax information is given, comma, for NOI approach. So over here, company X and company Y. Try to do answer on your own for company Y first of all. So let us start doing answer, friends. We'll start with the EBIT, that is 30,000 into 20%, that comes to 6,000. For unlevered firm, interest is 0, EBT is 6,000, income tax rate is 50%, so earning after taxes is also 50%, 3,000. Cost of equity, that is 15%, because it is given to us in the question. Value of equity, 3,000 divided by 0.15. That comes to an amount of 20,000. Value of debt is 0 once again, and value of the firm is 20,000 plus 0, that is 20,000. There is only one source of finance, that is equity. So weighted average cost of capital slash cost of equity will remain same. That is 15% in our example. This is the way we are required to make the calculation of the answer for company Y. Now the important point of the question starts. Everybody is requested to pay attention. Now NOI approach with taxes says that, देखो हमारा गलती हो गया कि हमने ऐसा बोला कि that there is nothing like optimal capital structure. अगर टैक्स है ना तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि लीवर्ड फर्म का वैल्यू ज्यादा होगा. हम लोग ऐसा मानते हैं कि लीवर्ड फर्म का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा. उन्होंने ऐसा बोला that with the introduction of the debt financing, इक्विटी शेयरहोल्डर्स का एक्सपेक्टेशन तो बढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता है. However, the company is getting advantage of interest tax saving. और इंटरेस्ट टैक्स सेविंग के फायदे की वजह से इट हैपेंस लाइक दिस दैट से द लीवर्ड फर्म का वैल्यू बढ़ेगा और उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा. बिकॉज द लीवर्ड फर्म विल गेट द एडवांटेज ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग जो अनलीवर्ड फर्म को नहीं मिलता है. दैट इज द काइंड ऑफ कंक्लूजन दैट से द NOI approach with taxes has made. Now how to make the calculation of answer वो भी हम लोग समझे, that is से समझेंगे. Please write an answer along with me.
First point, as per NOI approach, with taxes, comma, with introduction of debt finance, comma, expectation of equity shareholders increase, full stop. At the same time, comma, the company is getting an advantage of interest tax savings, full stop. Second point, due to interest tax saving advantage, comma, levered firm will have lower WACC and higher value of firm, full stop. Yes, anybody can tell me that, say, what is the formula of interest tax saving? So friends, the interest tax saving formula is interest into tax rate. That is what we understand is an interest tax shield or interest tax savings. One more thing to all of you, that what do you think, that what is the time period for which the company will be able to get the advantage of the interest tax savings? Dear students, we have made the initial assumption कि company will get, that is always issue the financing for perpetuity. There is no concept of the redeemable security. तो इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का फायदा भी हमको परपेचुइटी तक मिलेगा, ऐसा हम लोग समझते हैं. So third point, write down, levered firm will get interest tax savings advantage, in bracket right I'm writing interest into tax rate forever, that is for perpetuity. With paragraph write down, heading write down, calculation for company X. तो एक्स कंपनी लीवर्ड फर्म के लिए कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग्स. कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स? इट इज इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट. ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग कंपनी एक्स के लिए कर रहे हैं. तो चलो एक्स कंपनी का इंटरेस्ट कितना वो देख लेते हैं. देखो ईबीआईटी होगा 6000, इंटरेस्ट होगा 18,000 इंटू 10% यानी 1800.
तो ईबीटी हो जाएगा 4200, दिस इज 2100। अगेन ये तो हमको पता नहीं है, इसलिए हमको पता दैट इज हम लोग लिख नहीं सकते। फॉर द टाइमिंग हमको इंटरेस्ट का जरूरत है। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 1800 रुपीज। तो इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का कैलकुलेशन होगा ₹1800 into income tax rate 5050%, that comes to ₹900। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी एक्स के लिए इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का फायदा कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग्स। ना फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का फायदा परपेचुइटी के लिए मिलने वाला है, इसलिए वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला लाइक दिस, P0 is equal to A1 divided by I to compute the present value of the interest tax saving। ये परपेचुअल कैश फ्लो सीरीज का फॉर्मूला है। अच्छा, इंटरेस्ट टैक्स सेविंग कितना है? 900 रुपीज डिवाइडेड बाय क्या किया जाता है? रिलेवेंट डिस्काउंटिंग रेट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। So over here it is 900 divided by 10%. So this is the way we compute the present value of the interest tax saving। ये जो होगा ना फ्रेंड्स, that will be added to the value of the unlevered firm to compute the value of the levered firm। इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का फायदा जो एक्स कंपनी को फ्रॉम एंड ऑफ ईयर 1 ऑनवर्ड्स फॉर परपेचुइटी मिलने वाला है, इन सब फायदे को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कन्वर्ट करेंगे, and that is the amount which will be added to value of unlevered firm to compute the value of the levered firm। इसको एक अलग तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। वैल्यू ऑफ द डेट इनटू टैक्स रेट, सिंपल। वैल्यू ऑफ डेट कितना है? 18,000 रुपए। इनकम टैक्स रेट कितना है? 50%। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9,000 रुपए, जो हमने कैलकुलेट किया है। ऐसा क्यों, उसका मैं आपको रीजन समझा देता हूं। ये जो छोटा सा फॉर्मूला, उसका मैं एक छोटा सा रीजन आपको समझा देता हूं। देखो, P0 इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाय I। ये हमने लॉजिकली समझा है, क्यों? क्योंकि परपेचुइटी के लिए टैक्स सेविंग है। तो क्या होगा? इंटरेस्ट टैक्स सेविंग्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टैक्स सेविंग कैसे होगा? इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? वैल्यू ऑफ डेट फाइनेंसिंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या हो गया? ब्याज हो गया। इनटू टैक्स रेट क्या हो गया? टैक्स सेविंग्स हो गया। डिवाइडेड बाय क्या किया जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको डिस्काउंट करने के लिए। नाउ यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे के सामने कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग क्या हो गया? वैल्यू ऑफ द डेट फाइनेंसिंग इनटू टैक्स रेट। ऐसा करके हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ये हमारा सेकंड वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। लीवर्ड फर्म का मतलब क्या? यहां पे कंपनी एक्स हमारे एग्जांपल में। तो वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म का कैलकुलेशन कैसे होता है? वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग्स। ऐसे किया जाता है। अनलीवर्ड फर्म जिसको टैक्स सेविंग का फायदा नहीं है, उनका वैल्यू कितना है? 20,000 रुपए, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग कितना है? 9,000 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा? 29,000 रुपीज। ऐसा करके हम लोग वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर, सो दिस इज एन अमाउंट ऑफ 29,000। डेट फाइनेंसिंग का वैल्यू कितना है? 18,000 रुपए। तो इक्विटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर।
Use your calculator. 29,000 minus 18,000, that comes to 11,000. And again cost of equity will be found as balancing figure. कैसे? Earning after taxes upon cost of equity. That is the way. So the cost of equity will be found as balancing figure. 2100 upon 11,000 into 100. That comes to 19.09 परसेंटेज. तो हम लोग क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे वापस कि इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ द टैक्स सेविंग एडवांटेज ऑफ द इंटरेस्ट लीवर्ड फॉर्म का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा. जैसे कि 6,000 into 0.5 1 minus tax rate upon 29,000, that comes to 10.34 percentage. यानी हम लोग ऐसा कर सकते हैं that working note number 4, calculation of weighted average cost of capital. अगेन उसमें आप दो मेथड कर सकते हैं. मेथड नंबर 1, उसमें क्या किया जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ केडी किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग. कैसे? इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट. इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स? 10% है. टैक्स रेट कितना है? सिर्फ 50% है. तो कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग क्या होगा? 5%. अच्छा, देन अगेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसमें क्या लिखेंगे? इक्विटी एंड डिबेंचर्स. फिर क्या लिखेंगे? अमाउंट. सो 29 माइनस 18, तो ये 11,000 हो जाएगा, ये 18,000 हो जाएगा. टोटल कितना हो जाएगा? 29,000. 11 upon 29, that comes to 0.3793. 1 minus 0.3793, so 0.6207. ऐसा हमारा वेट हो जाएगा. टोटल ऑफ द वेट इज ऑफ कोर्स 1 मल्टीप्लाइड विद द कॉस्ट. इक्विटी का कितना है? 19.09. डिबेंचर्स का कितना है? इंपॉर्टेंटली 5% है, 10% नहीं है फ्रेंड्स. सो वेट इनटू कॉस्ट 0.3793 इंटू 19.09, तो मेरा आंसर आता है 7.24. 0.6207 इंटू 5, 3.10. तो देखो टोटल क्या आ गया? 10.34. अब इसी को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. मेथड नंबर 2, उसमें कैसे किया जाएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इनटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म. सिंपल. ईबीआईडी कितना है? 6,000 रुपए. टैक्स रेट कितना है? 50%. वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है? 29,000 into 100 for getting answer in percentage. So 3 upon 29, 10.34%. This is the way we can compute the weighted average or overall cost of capital. So this is the way valuation is done. This is 20,000 plus 9,000. Weighted average cost of capital. Now this is really the important working. Value of the company X. Weighted average cost of capital can be done by either of the method. Now again friends, we can draw a diagram like this. On x-axis we have the debt financing in capital structure.
and on y-axis we have the cost of capital. We understand that say this is the cost of debt financing. Now this time this is the line of the weighted average cost of capital. I'm sorry. This is the line of weighted average cost of capital. Why? Because we understand with the increase in the debt financing, the weighted average cost of capital is falling down due to tax saving advantage on the interest component. And this is the cost of equity financing. We understand that so the expectation of the equity shareholder increases, but interest tax saving के फायदे की वजह से weighted average cost of capital is falling down. So this is NOI with income tax. Please draw the diagram. So we understand that over here finally that with the NY approach with taxes an optimal capital structure exists. Again a capital structure which has the maximum debt financing is the optimum one. Why? Because with the increase in the debt financing value of the firm increases and weighted average cost of capital reduces.